Kiva. Okay, the first question for you on your screen. यार आंसर कौन हमको कहलो? Statement number 1, online पिला पे लिखो. The launch vehicle used for Chandrayaan 3 was launch vehicle Mark 3, LVM-3. The weight of the payload of Chandrayaan 3 was kept less than Chandrayaan 2. Chandrayaan 3 has been successful in measuring the soil temperature of the moon. 30 seconds नहीं हम लिख देंगे. B पिला लिखुचंदी B2 and 3. Okay. Rosmire Khaswai Saudamini Bonda. More voice audible अच्छे right? Yes, ma'am. Oh. समस्ते प्राय B लिखुचंदी. तमन कौन कहूच? फोन लिखिगी. Oh. 1 and 3. Okay, the launch vehicle कौन थिला? 2 and 3 काहेंगे पिला लिखुचंदी? 1 तो पूरा right statement अच्छी. 1 तो correct. हम last class देखी थिले right? Was LVM-3 launch vehicle Mark 3. 3 correct हबो ना नहीं को. Soil temperature मु कहथिली ना से माने सबु element study करिवे right? Soil temperature, so this is a correct statement. खाली हमको जानिया जे 2. It right हबो ना नहीं. The weight of the payload of Chandrayaan 3 was kept less than. It हला wrong statement. Okay? Chandrayaan कौन हला? हाँ? अच्छा. Inside joke. Okay, ताले कौन हबो? Weight of Chandrayaan 3 was kept less. It हला wrong statement. Chandrayaan 3 रो weight अधिक थिला. तो answer कौन हबो ताले? 1 and 3. Okay? C is the correct answer. Okay, एटा कलो 30 seconds time देबी मु answer भावरे भाभी को. Consider the following protected areas. एथरे कोटा declare tiger reserve से पचर्च. Yes. Online पिला मने तमने को कौन हबो answer? 1 Yes, 1 3 4 हबो समस्त right answer because भीतर कनिका नुहे तो सेटा 2 यदि काटि दबा 2 wrong right. So 1 3 4 correct. Okay. एटा कहला एटा as it is question आस्तिला तम last test रे सेटा म आउथरे पकेछि. या आंसर कोन हबो? UNESCO Creative Cities Network, UCCN. Only the cities of UNESCO's member states and associate members are eligible. Cities are categorized under 8 creative fields. India has cities in all fields. Kozhikode is the first Indian city to get City of Literature tag. C, ma'am. C. All except 2 and 3. Okay. कितने associate members थे कहाँ मान्य अच्छी? 12 ma'am. 12 very good. के कोई answer very good. हो. और इटा कितने category थिला? 7. So it is a correct answer. It is wrong. India has cities in all fields of the network. No ma'am. Yes, सब fields में नहीं. So again wrong statement. और इटा कौन हबो? डहला? Yes. Correct. या सहित आवड़े city थिला कोड़ा? Gwalior ma'am. ग्वालियर को कौन पाए मिलता? हाँ? Literature. ना literature टा? Literature. ग्वालियर टा कौन पाए मिलता? Music.
ए स्लाइड टा मो शेयर कर देती तम मन को पकरे आछि ना नाही मिले नी मैम म्यूजिक से म्यूजिक राइट यस जाला म्यूजिक पाए एटा तो हम शेयर कर देछि अच्छा अच्छा हो मु लास्ट टा शेयर कर देथिले ओके तो आंसर कोन हो यार ऑल एक्सेप्ट 2 and 3 राइट एटा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ता स्टेट सहित तुमको लिखिवार अछि कोडा राइट अछि कोडा रॉन्ग ऐरावतेश्वर टेंपल तमिलनाडु विक्टोरियन गॉथिक एन्सेम्बल गोवा जंतर मंतर दिल्ली विरूपाक्ष टेंपल कर्नाटक रामप्पा टेंपल तेलंगाना how many of the above pairs are correctly matched कोडा कोडा को correctly matched take 30 seconds भलरे भाभी के जो 1345 correctly 1345 correct अछि 2 काहे के रॉन्ग अछि because कोडी अछि तेटा मुंबई रे अछि मुंबई yes तो लेडा कोन एटा हेजबा महाराष्ट्र ओके एटा करेक्ट 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 हला तो केतेटा हबो ओनली 4 ओके एटा कोन हबो यार आंसर A sandy and saline area is the natural habitat of an Indian animal species. The animal has no predators in that area, but its existence is threatened due to the destruction of its habitat. Who animal है पारे सेटा? Indian wild ass. को sandy and saline area da कोडा? Little Kutch. Little run of Kutch. लिटिल रन ऑफ कच Yes. गुजरात एटा कौन हबो? Little run of Kutch है ना? Answer will be Indian wild ass. Here IUCN status कौन अछि? Indian wild ass ro? हाँ? Vulnerable. एंडेंजर्ड Endangered ना near threatened? नियर थ्रेटेड हाँ मते भी लागु छेड़ा near threatened अछि. फिर भी चेक कर दबा उथे. Near threatened ना endangered है ला? ठीक है जो स्लाइड देखला बेले नियर थ्रेटेड ओके ता ठीक रनिंग नोट्स समस्त लिखि दोथबे हला ताकि गोटे टॉपिक रे ठीक मन रहि जीवो जिंस राइट ओके एटा ए क्वेश्चन ता को हमें कार टी सेल थेरेपी पढितिले तार क्वेश्चन एटा with reference to the chimeric antigen receptor CAR T cell therapy, which of the following statements are correct? It falls under the category of radiation therapy. This therapy is less demanding as it has fewer side effects due to compared to traditional treatments like chemotherapy. Only 2 habo. Online pila tamane koila dekhi. No. ओनली 2 मैम Only 2. कोटा करेक्ट पचाउची से. तो 2 तो हमें जानिबा ठीक अछि बिकॉज़ से कोची फ्यूअर साइड इफेक्ट्स अछि कंपेयर टू कीमोथेरेपी रे बहुत अधिक साइड इफेक्ट्स थाए. तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. खाली हमु जानियर अछि 1 टा करेक्ट ना नाही राइट. 1 टा काहे कि रॉन्ग हबो? रेडिएशन थेरेपी नु है. यस हमें ताको कोन कोचु जेनेटिकली ताको हमें मॉडिफाई कर दोचन राइट.
आमे किछि जिंस गोटे एडिशन करछन्ती इन द जीन इटसेल्फ, दैट इज नॉट एनी काइंड ऑफ रेडिएशन. वेरी गुड. ताले ओनली चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. हो ठीक अछि, समस्त परीक्षा रे पास. चलो आज मॉक टेस्ट नंबर 10 आरंभ करिबा हला. Consider the following statements regarding Pralay missile. Surface to surface short range ballistic missile. Ballistic माने कोन ता ट्रैजेक्टरी टा केमिति थाए ए भलिया. एटा surface to surface एटा हला करेक्ट. Short range ballistic missile has a range of 150 to 500 kilometer. So both the statements are correct. एटा कोन पाई न्यूज रे थिला बिकॉज़ येता पाथ को चेंज करि परिबो हला हम इंस्ट्रक्शंस हिसाब रे. एटा किए बनै चंते एटा डेवलप बाय DRDO. सरफेस टू सरफेस मिसाइल डेवलप बाय DRDO. पृथ्वी डिफेंस व्हीकल ता अंडर एटा क्रिएट हितला हला. और डिप्लॉय कोठी करा जिवो LOC LSC एरिया रे. सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर रेंज ऑफ 150 टू 500. देखो केमती नोट्स बनेबो एकदम कीवर्ड्स खाली लिखिबो हला. राइट डाउन प्रलय मिसाइल नंबर 1 पॉइंट लिख दबो कि शॉर्ट रेंज ballistic missile ता रेंज तमे चाहिले मेंशन कर परिबो नले नाइ 150 टू 500. तापरे नंबर 2 रे लिखि दबो DRDO. आउ कोन लिखा हिची सॉलिड प्रोपेलेंट एते भी ये नाही. It is important ability to change its path after covering a certain range mid air. ताको कोन कोनती मैन्यूवरिंग कोनती राइट. हमें ताको डायरेक्शन देकी ता पाथ हमें चेंज करि परिबा ताकि एनिमी न जानि पारु. ओके आउ कोन लिखिया बतरे लिखियो चेंज इट्स पाथ and solid propellant rocket motor एटा चाहिले लिख परिबो. ओके एमती तुम दुतीटा लाइन दे ट्राई टू गोटे समराइज कर दियो. रनिंग नोट्स लिख ए जिंस ही मने पड़िबो जते लिखिथिबो. लिखि सारो मैडम गोटे क्वेश्चन है. हां कोंतु हां कोंतु क्रूज भितरे कोन फरक बालास्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल भितरे कोन फरक अछि. एक्चुअली बैलिस्टिक रो ट्रैजेक्टरी टा एमती थाए आ क्रूज टा क्वाइट शॉर्टर से एमती जीवो. तो हां सीधा एटमॉस्फेयर ऊपर को जाई कि से पड़िबो बट ये सीधा जीवो. तो कोन हबो ना क्रूज टा डिटेक्ट करिया सेतपे कष्ट. बैलिस्टिक टा डिटेक्ट करिया इजी. से जो ता पाथ पई डा कहा जाउ छै. ओके मैडम बालास्टिक रो एग्जांपल कोन ब्रह्मोस. एटा तो बैलिस्टिक प्रलय क्रूज रा पचार चंदी की क्रूज रा एग्जांपल कोन कोन एग्जांपल सर्च ब्रह्मोस टा क्रूज. ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. Which has been become the first state of India to link ecosystems with green GDP. First of all, green GDP कौन? GDP जोटा green pen में लिखा ही थी वो. इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैम जोटा विदाउट Yes. emission of carbon dioxide. ओके ब्रह्मोस निर्भय एवडा सब क्रूज मिसाइल है लाके एवडा पचार थिले नोट कर देबे. आज्ञा ब्रह्मोस ए सब हला क्रूज मिसाइल. तो ग्रीन जीडीपी कोन जेतला हमें जीडीपी माने कोन देश रे जति की प्रोडक्शन होची राइट. एटा सर्टेन ईयर रे
यूजुअली टाइम पीरियड कितनी निया था जीडीपी पाई 1 ईयर निया था गोटे टेरिटरी निया था लेट अस से द टेरिटरी इज इंडिया एतरे जति की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होची गोटे वर्ष रे ताको हमें कहबा जीडीपी तो जति की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करिया पाई हमें तो एनवायरनमेंट को किछि परिमाण रे हार्म करथुवा राइट हार्म हैला बोली किछि जिंस प्रोड्यूस होची मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रे केते हम सब केमिकल्स एमिट होची राइट तो सेति पे एबे गोटे कांसेप्ट आछि कोन ग्रीन जीडीपी माने कोन टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी ठीक अछि त माने कोन हमें जीडीपी रो किछि अंश माइनस कर दबा बिकॉज़ समवट माइनस कले कोन जति के हमें एनवायरनमेंट को हार्म करचंती से जिंस को से सब्सट्रैक्ट करबा तर नेट हमें एक्चुअली केते की सस्टेनेबली प्रोड्यूस करछु सेटा जाना पड़ियो ओके दैट इज द कांसेप्ट बिहाइंड या एग्जाम यार आंसर कौन हबो छत्तीसगढ़ राइट ओके इति तुमको जानिया इंपोर्टेंट कि ग्रीन जीडीपी टा कौन एटा हला इंपोर्टेंट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस द कॉस्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्लस द कॉस्ट ऑफ डिग्रेड माने ए टोटल जिंस को हमें माइनस कर दवा केते इकोसिस्टम को हमें केते डिग्रेड करचंती हला एनवायरनमेंट को केते हमें प्रदूषित करचंती ता बाबद रे हमें जहा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करचंती सेटा को आ जाउची ग्रीन जीडीपी एटा किए बे प्रथमे आनी छी छत्तीसगढ़ एबे अप्लाई करछ बिकॉज़ काहे कि छत्तीसगढ़ करथिबो बिकॉज़ छत्तीसगढ़ रे बहुत अमाउंट रे फॉरेस्ट अछि राइट हम सब बड़े फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट पढुचंती छत्तीसगढ़ ऑलवेज नंबर 1 की 2 रे थाए राइट सतिबे छत्तीसगढ़ हैज इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट because the state is rich in mines minerals forest resources kahe ki need darkar why do we need green gdp because gdp overlooks environmental depletion and degradation often treating them as economic gains सबले गोटे फेमस ऐसे टॉपिक कौन आसे इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट कैन दे एग्जिस्ट टुगेदर राइट तो सही सब पाई तमे एठा मेंस रे भी कोट करि परिबो ग्रीन जीडीपी रो कांसेप्ट तो सम टाइम जतले गोटे ऐसे आसला ना फॉरेस्ट आर द बुक्स फ्रॉम व्हिच ह्यूमंस लर्न केमती गोटे माने मोटा मोटी सिया थिला कि फॉरेस्ट गोटे प्रकार रो हम पाई कोन हि परंती गोटे प्रकार मैनुअल हे परंती जोसु के हमें बहुत दिन से सिखि परिबा इन रियल लाइफ तो सेतरे ग्रीन जीडीपी रो कांसेप्ट भी हमें यूज करि परिबा कि केमती सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करि परिबा So the state is Chhattisgarh has introduced an innovative plan that connects ecosystem services of its product with green GDP. The forest accounts for Chhattisgarh's 44% of land cover. The rural economy को भी कौन सब contribute करचंदी तेंदू leaves, honey, lac, मेडिसिनल प्लांट्स एमन समस्त कोन करचनी बहुत परिमाण रे कंट्रीब्यूट करचनी रूरल इकोनॉमी तो ए सब जिन सब चले से माने सच में कोन आनचंदी ग्रीन जीडीपी ऑलराइट मूविंग ऑन एना देखि दबो त माने मोर लिटरेचर देखो कोन हबो एटा आंसर अल नजा नसीम अल बहर आर द डिफेंस एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड ओमान यस इंडिया एंड ओमान सेतिरु ओडा को एक्सरसाइज खाली मन रखियार अछि एक्सरसाइजेस पे ऑलरेडी मोडे शीट देथिली से सब जाको एग्जाम पूर्व दिन देखि जाइथिबो आर्मी एक्सरसाइज हला अल नजा एयर फोर्स हला ईस्टर्न ब्रिज नेवल एक्सरसाइज हला नसीम एला तुमको जानियार अछि कि एनुअल ना बाइनियल ना से सब तुमको मन रखियार अछि हला ओके एटा बाइनियल हला बाइनियल सेटा सब मन रखिबो सेटा ही स्टेटमेंट रे से माने एपट सेपट ट्विस्ट कर देथिबे ऑलराइट एटा को एबे 17th ब्रिक समिट कोडी इतला ब्राजील रा कोडी इतला रियो डी जेनेरियो यस वेरी गुड नेक्स्ट के करिवो इंडिया वेरी गुड नेक्स्ट हला विल बी डन बाय होस्टेड बाय इंडिया
ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिक्स रे को कंट्री अछंती फर्स्ट इट वाज स्टार्टेड एज ब्रिक लेटर साउथ अफ्रीका जॉइंड Brazil, दिस इज ब्राजील Russia, रशिया India, India, इंडिया China, China, चाइना yes, एबे Russia, ताप South, 2011 रे साउथ अफ्रीका South Africa, जॉइंड ओके एटा काहे के 2010 रे ma'am 10 रे 2010 रे 2010 रे South Africa. हाँ बट फॉर्मली के बेस थिला माने गोटे मीटिंग रे अनाउंस करंती तापर से आसी जाय तो 10 की 11 देखि दबो ओके एटा एक्चुअली काहे कि ब्रिक्स रो से माने काहे कि भाबिथिले जे वी शुड एस्टैब्लिश समथिंग कॉल्ड एज ब्रिक्स कोन भाई बिकॉज़ द वर्ल्ड वाज गोइंग मोर एंड मोर यूनिपोलर हे चलथला बिकॉज़ ऑफ यूएसए रो डोमिनेंस राइट तो गोटे मल्टीपोलर वर्ल्ड एग्जिस्ट करिया पय ए माने आसी गले कोन कहले ना एटा नॉन माने एटा एंटी वेस्टर्न नुह बट एटा नॉन वेस्टर्न समान ताको मिसे ना माने नुहे माने यूएसए रो विरुद्ध रे काम करछंती एजेंडा इज नॉट एंटी वेस्टर्न चिकिस्टा शॉर्ट नोट्स मु तम मान को पय बने थिनी यू कैन नोट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल 2006 रे माने कोठी मीट करथांती सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया सेटा गोटे G8 लीडर सबमिट हेतिबो सेठी माने मिसिकी से जेनेसिस मन आरंभडा सेमति हेतिबो 2009 रे प्रथम ब्रिक्स सबमिट हेतिला जोतरे कि सेटा सेतबेले जाय ब्रिक थिला हला जाय साउथ अफ्रीका डिड नॉट जॉइन एमान को कोन कहया जाउची ना इंजिन्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ राइट एंड व्हाई इज ब्रिक्स इंपॉर्टेंट बिकॉज़ around 494 billion 94 billion थिला एबे सेटा केते ही पलानी ट्रेड यू नो अराउंड 4.66 ट्रिलियन तो भाबु था हमर ट्रेड केते परिमाण रे ब्रिक कंट्री सहित होउची सो ट्रेड पार्टनर्स हिसाब रे भी दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एबे समथिंग वी हैव दैट इज कॉल्ड एज ब्रिक्स प्लस तो ब्रिक्स प्लस रे को कंट्री अछंती Ethiopia, Saudi Arabia, South इथियोपिया ईरान Egypt, इंडोनेशिया Egypt, Ethiopia, Iran, UAE, Saudi Arabia, इथियोपिया यूएई आउ को कंट्री इंडोनेशिया इंडोनेशिया एई सतरे Asia, हाँ साउदी अरेबिया अछि कि मैडम एक्चुअली साउदी अरेबिया टा तांको वेबसाइट रे से माने शो करचंती कि आसी जाइछि बट से फॉर्मली जॉइन करनिए जाय से ग्रहण करछि बट फॉर्मली आसीनिए जाय तो तुम लिखि परिबो तो एबे के अछंती ईरान इजिप्ट इथियोपिया यूएई इंडोनेशिया इंडोनेशिया इज 17th ब्रिक्स रे ही फॉर्मली जॉइन करछि तो एथरे को कंट्रीज अछि ताले कोडा नाही तो पचार कि which of the following are members Argentina, ना खाली अर्जेंटीना नाही वेरी गुड अर्जेंटीना इज नाही दुई काट दियो तो आंसर कोन हबो 134, एक्चुअली साउदी अरेबिया टा भी क्वेश्चनेबल किंतु साउदी अरब नाही एटा में कंसीडर करि परिबो जेते 4 डीटा राक ऑप्शन रे अछि हां सेमान को जो मैप रे भी से माने एमते लिखि जंती देखो एटा तांको मैप देखो साउदी रे इनवाइटेड टू जॉइन बट हैज नॉट ऑफिशियली एक्सेप्टेड मेंबरशिप रे साउदी आसुच तो तमे साउदी को लिखि परिबो कुछ नाही जोडी साउदी मेंशन हिथिबो यू कैन ऐड हला किछटा इनिशिएटिव्स ऑफ ब्रिक्स कहला देखिया गोटे हला न्यू डेवलपमेंट बैंक हला ये कौन काम करे यस इंटरेस्ट कम रे लोन दबो हला
सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करबो, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स दबो, ओके कम इंटरेस्ट रे लोन दबो, जो तुम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो काम करछंदी ब्रिक्स नेशन पे से काम करिवो, ओके देयर इज समथिंग एल्स कॉल्ड एज कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट हला, एटा भी गोटे इनिशिएटिव ऑफ ब्रिक्स कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, ओके सेतरे से माने कोन करिवे सेटा गोटे $100 बिलियन रो पूल हला, सेतरे से माने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनिबे ताकि मेंबर कंट्रीज किछि प्रकार फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी न फेस करंतु बोली गोटे पूल रखी चंत हला कंटिजेंसी, किंतु तमे रखाई थाए ना तमर जदी किछि हला सुविधा असुविधा तले कंटिजेंसी फंड थाए सेही बळिया डिजास्टर मैनेजमेंट तो मन जानथिबो, तो तांकर गोटे कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट भी अछि। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम हला, दिस इज द वन, इट हैज टू, थर्ड हला ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम नहीं है बट से स्विफ्ट रो ये पाए माने आनचन जेतु रशिया यूक्रेन वॉर रे कोन इतला रशिया को समाने बाहर कर देथिले। हाँ यू कैन राइट, ए सब वाले क्वेश्चन आछे तम मेंस रे देखिबो कि एटार हबा कथा ना नाही ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। तापरे कस्टम्स एग्रीमेंट अछि जोतरे कि तांकर ट्रेड फास्टर करिया पे से माने आनचंती द कस्टम्स एग्रीमेंट, एंड फाइनली तांकर निजर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अछि सो दैट दे कैन जॉइंट ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग ए सब करि परिबे हला, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन एटा सब इनिशिएटिव्स ऑफ ब्रिक्स, ओके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। न्यू डेवलपमेंट बैंक रो हेडक्वार्टर कोठी अछि? मानिला फिलिपाइंस। यस देखो एट सब लिखा है कि समान को ग्लोबल शेयर केते अराउंड 45.9% ऑफ पॉपुलेशन अछि, 27% ऑफ जीडीपी अछि हला, ऑयल प्रोडक्शन 42.5%, एक्सपोर्ट से 24.8%, ऑलराइट तो ब्रिक्स गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट ग्रुपिंग। एट द ऑलरेडी वी हैव सीन इट, फर्स्ट थिला ब्राजील रशिया इंडिया चाइना तापर लेटर साउथ अफ्रीका जॉइन, एटा तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू रो भी तुमको हेल्प करिवो कि केते तांग ट्रेड केते रो से माने ट्रेड करछंती, ओके केते रो ऑयल एक्सपोर्ट्स करछंती तमे सब मेंशन करि परिवो। एबी 17 ब्रिक्स आस्तला सबमिट से माने कोन मेन जिंस कथा है जंदी ओवरलुक कर दियो, प्रीलिम्स पे एते इंपोर्टेंट नो मेंस पे मोर इंपोर्टेंट। एबे कोन से माने चाहउछंती गोटे ग्लोबल साउथ रो रिप्रेजेंटेशन चाहउछंती, राइट यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल रे इंडिया कोन कहूची बहुत वर्ष हलानी ता परमानेंट मेंबरशिप मागुची ना नाही, सेइतरे से माने से जिंसटा को भी उठै चंती backed expansion of the UN Security Council to include more permanent members from Asia, Africa, Latin America. Okay. तापर क्लाइमेट फाइनेंस आजिकली सब समिट रो गोटे टॉपिक, राइट मोर एंड मोर कार्बन मार्केट्स आसो, मोर एंड मोर क्लाइमेट फाइनेंस हो, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज वेरी वेरी रियल। तापर हला कोन पहलगाम अटैक को समाने कंडेम करचंती हले, आउ तापर अफ्रीकन सॉल्यूशंस टू अफ्रीकन प्रॉब्लम्स called for a Gaza ceasefire and two-state solution. Gaza रो जो conflict चलची तापाई भी समने से बिसर भी they called in for a solution. आउ कौन advanced talks on cross-border payment initiative to reduce जोड़ा de-dollarization को आयोजी, right? Dollar रो influence को कम में बापाई because कौन करे more often USA has a monopoly. Supported new development banks expansion, BRICS multilateral guarantee, तापर हला AI governance. Concluded the data economy governance understanding. So देखो आजकल सबुतरे गोटे AI is a common topic and climate is a topic. ସେଥିପାଇଁ no wonder तुम एसएरी सबबेले आछी AI नले climate change जहा जोडा ऑल ओवर वर्ल्ड होची सेटा ही पचारिबो एग्जाम रे। तापर tuberculosis, it launched the partnership for elimination of socially determined diseases tuberculosis to tackle health disparities.
All right. Moving on. देखिए next question हला. Which of the following are members of OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries? तारो members के